वैसे हाँ, around the topic you can suggest something. Topics is feelings की ऐसी की तैसी. तो अब ओके, तो टॉपिक इज कि कभी कभी कोई बात बहुत ज्यादा स्टक हो जाती है हमारे माइंड में, राइट? मतलब कुछ भी कर लो, चाहे हम एग्री कर लें उस सिचुएशन को। आई थिंक बहुत से लोगों को ये Around प्रॉब्लम the होता है। topic you can हम suggest something. सिचुएशन को एग्री कर Topics लेते is हैं कि ये feelings बदल की नहीं ऐसी की सकता, तैसी. कुछ भी हो, वो चाहे एग्जाम रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, या कोई भी फीलिंग रिलेटेड, बट वहां पर माइंड स्टक हो जाता है। देन व्हाट शुड डू, व्हाट शुड वी डू? आई थिंक ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम भी होगा ऐसा। जया, एक प्रॉब्लम मेरा भी है, पता है क्या है? जो क्या? लोग मुझे दिखाई नहीं देते ना, उनके मुझे उनकी आवाज सुनाई भी नहीं देती. अभी, अरे सर मैंने किया था ऑन कैमरा, पहले ऑन ही था। तो मैं तो अभी ऑन क्यों नहीं था फिर? क्योंकि वो मैं का बटन दबा रही थी, तो साइड में शायद हो गया होगा। लेकिन अभी मेरा अभी क्वेश्चन ना एक लाइन में रिपीट करो. क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी बात को लेके स्टक हो जाते हैं, चाहे हमने वो बात एक्सेप्ट कर ली है कि ये सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, तब भी हम स्टक हो जाते हैं, देन व्हाट शुड वी डू? हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमको स्टक नहीं होना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, फिर भी हम स्टक हो रहे हैं. हाँ, मतलब माइंड में वो थॉट चलता रहता। जैसे कोई एग्जाम है, हमने क्लियर कर लिया है, क्लियर नहीं किया है, वो चलता रहता है हमारे माइंड में, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं हो सकता है, फिर भी कुछ ऐसा, हमेशा नेवर गिव अप की स्ट्रेटेजी काम नहीं आती। हम्म. तुमने क्या सॉल्यूशंस ट्राई किए अभी तक, बताओ पहले. सोल्यूशन, द बेस्ट सोल्यूशन एवर, सुदर्शन क्रिया। आई मीन वही मैंने किया था। वो जब भी मैं करती हूँ। ओके. लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि जैसे रात को सोने से पहले माइंड में वो थॉट जब तक नहीं आता, मेरी नींद कंप्लीट, मतलब नहीं क्यों मुझे सर नींद नहीं आती उस थॉट को जब तक मैं सोच न लूं, ऐसा मुझे लगता है। सी देखो, थॉट्स एंड फीलिंग्स को अगर इतना इंपॉर्टेंस देंगे ना, तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. राइट। कोई थॉट आ रहा है, कोई थॉट आके स्टक हो गया है, कोई थॉट बार बार आ रहा है. See, if a fly comes and sticks to your nose, what will you do? मैं हाँ, एक मक्खी आके नाक पे बैठेगी तो क्या करोगे? हटा दूंगी ऑब्वियसली। हाँ, बस. ये एनालिसिस करोगे क्या कि मक्खी अभी नाक पे बैठी है, अब क्या किया जाए? नहीं। नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है एनालिसिस करने का. जस्ट शू इट अवे एंड कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग. यू ऑलवेज नो व्हाट्स द राइट थिंग टू डू, राइट? मन को जो भी बोलना है बोलने दो, तुम तुम्हारा काम करो. आर यू गेटिंग दिस? यस सर। देखो, मन की बातें सुनने की जरूरत नहीं है. आपको संडे को मन की बात सुनना है तो आप सुनो, लेकिन मन की बातें सुनने की जरूरत नहीं है. नहीं सर, मेरा मन जो, कुछ भी बोलता है. मैं नहीं करती हूँ, मेरा मन जो कहता है वो मैं नहीं करती। मैं उसको बोलती हूँ नो मीन्स नो। हाँ, बस तो काम हो गया ना फिर. जैसे कि मैं नहीं, बता। सुनो सुनो, नो बोलोगे ना तो गड़बड़ है. मन को नो बोलोगे ना तो गड़बड़ है. मन की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं. मन के साथ उलझो मत. मन को हाँ भी मत बोलो, ना भी मत बोलो. मन के साथ कोई एनालिसिस मत करो, तो फ्री रहोगे. थॉट को लेकर क्लियर रहना चाहिए, तो क्लियर रहना चाहिए बस। थॉट नहीं, कमिटमेंट को लेके क्लियर रहना चाहिए. कमिटमेंट को थॉट तोड़ता है. कमिटमेंट को लेकर, जो भी हम कमिट कर रहे हैं, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. See, for how many of you this is making sense? मन को जो बोलना है बोलने दो, तुम तुम्हारा काम करो. कमिटमेंट को तुम्हारे थॉट्स तोड़ते हैं. इट्स मेकिंग सेंस ना? ओके, गुड. थैंक यू। वंडरफुल जया. थैंक यू फॉर स्टार्टिंग द Q&A. You took the initiative. वेरी गुड. ये ऐसे ही इनिशिएटिव लेना है और आगे बढ़ना है ना? कमिटमेंट भी तो थॉट से आया है एक बार, नॉट नेसेसरीली. कमिटमेंट कम्स फ्रॉम अ डीपर लेवल देन योर थॉट.
इट कम्स फ्रॉम योर कॉन्शियंस. जो कमिटमेंट थॉट लेवल से आया ना, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं. अपने आप को क्लियर रखना चाहिए कुछ चीजों को लेकर, ताकि क्लियर होना चाहिए. लाइक हमें जैसे पता है कि ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, और जो करना है वो करना है. बिल्कुल इतना होना चाहिए. बिल्कुल. सो दिस, सी एवरीबडी जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कमिटमेंट को आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स पूरा डैमेज कर सकते हैं. कमिटमेंट एंड फीलिंग्स के बीच में चॉइस आती है, तो क्या चूज करना है? कमिटमेंट चूज करना है. कमिटमेंट एंड कुछ नेगेटिव थॉट के बीच में चॉइस क्या करना है? कमिटमेंट को चूज करना है ना? एंड जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग सुदर्शन क्रिया, दैट डजंट मीन एवरीथिंग विल हैपन नाइसली फॉर यू. अल्टीमेटली इट इज योर एक्शंस दैट मैटर. सुदर्शन क्रिया तो दिन के आधे घंटे करते हो ना. सर मैं ऑल टाइम बिजी रहती हूँ, बस नाइट को Jaya, सोने. Jaya, I'm not talking to you right now. Wait, now you mute yourself. I'm now addressing the whole group. Okay. भैया may I ask a question? Wait, what we will do now? It is better that you raise your hand. Okay. है ना? जिसको भी पूछना है ना, आप सडनली अनम्यूट नहीं करना, आप हैंड रेज करना. और यहाँ पे चैट में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते जा रहे हैं. सो आई विल टेक one by one. Thoughts keep coming and interfering with our daily activities as well. Exactly, that is the nature of thoughts. That is the nature of thoughts. You decide what you want to follow. Commitment को strong कैसे करना है? By practicing commitment. जो भी देखो, if you want to become an expert cook, what should you practice? Cooking. If you want to become an expert cyclist, what should you practice? Cycling. If you want to become an expert pianist, what should you practice? Playing the piano. If you want to strengthen your commitment, what should you practice? Commitment. See, जिस चीज की तुम अपने आप को आदत डालोगे ना, उसमें तुम स्ट्रांग हो. अगर तुम कमिटमेंट बार बार तोड़ते रहोगे तो क्या होगा? You will become a very strong person in breaking commitments. जो भी चीज तुम बार बार करते हो, उसमें तुम स्ट्रांग हो जाते हो, उसमें तुम एक्सपर्ट बन जाते हो. So you decide what you want to become strong in. If you want to become an expert in breaking commitments, then please develop the habit of breaking commitments. If you want to become strong in keeping commitments, then please develop the habit of keeping the commitment. वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ता. It's no rocket science, I tell you. कुछ नहीं करना पड़ता. It's very easy to strengthen your commitment. जो भी छोटी commitment है ना, just tell yourself, okay, I have made the commitment. I want to develop the habit of keeping commitments. So I will keep this commitment, whether I want to keep it or not, whether I feel like keeping it or not. How to improve your confidence when things are not in your control. Okay. I think Deepak Agarwal, are you there? I think he's logged out. Feelings and emotions में क्या difference है? Feelings डिक्शनरी में इमोशन के बाद आता है. ये डिफरेंस. कुछ नहीं, जस्ट यार अभी एक और शब्द है. Sometimes you feel like using the word emotions. Emotions से इमोटिकॉन्स बनते हैं, फीलिंग से फिटिकॉन्स नहीं बनते हैं. तो थोड़ा थोड़ा फर्क है ना. अगर हमारी फीलिंग किसी और की फीलिंग से अफेक्ट हो रही है तो क्या करें? अरे भाई देखो, एक तो टॉपिक क्या है, फीलिंग्स की ऐसी की तैसी. अभी उसमें तुम हमारी फीलिंग और उसकी फीलिंग. फीलिंग्स आर लाइक क्लाउड्स. कोई भी क्लाउड परमानेंट होता है क्या आसमान में? आज तक आपने देखा कोई परमानेंट क्लाउड देखा स्काई में? बट स्काई को रोज देखते हो कि नहीं? स्काई परमानेंट है, राइट? फीलिंग परमानेंट नहीं है. तो जो इतना टेम्पररी है उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है? सी, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू यू? जो कभी कभी ऐसे रास्ते पे दिखाई देते हैं
किसी दुकान में दिखाई देते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमेशा आपके साथ हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हु इज मोर इंपॉर्टेंट? द पीपल हु आर विथ यू ना, दे आर इंपॉर्टेंट टू यू, राइट? सेम वे, the people who are very temporary in your life, they are not so important to you. Feelings are like these temporary people who come and go. Hi, hello, bye, काम हो गया, चले गए. तो इनको फीलिंग्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है. How our food affects our feelings? Yes, बिल्कुल our food affects our feelings. आप देखो ना, क्या खाने के बाद आपको कैसे फील होता है. कुछ देर के लिए बहुत अच्छा फील होता है. When you eat a chocolate, कुछ देर के लिए बहुत अच्छा फील होता है. बाद में कैसे फील होता है? शुगर ड्रेन्स योर एनर्जी. डल फील होता है. बहुत ज्यादा स्वीट खाने के बाद कैसे लगता है? It dulls your energy ना. So definitely food affects your feelings. If someone judges you at work, even though you are trying your best, then it hurts. ये hurt क्या है? Another feeling, no? Who decided to get hurt? Tell me. Okay, wait. Who is this? Pallavi. Pallavi, a host. Can you spotlight Pallavi? Hi, Bhaiya. Where? I cannot see you. Jai Gurudev, Bhaiya. Oh, wait. Now I can see you. Sorry. Jai Gurudev, Bhaiya. Pallavi, you are a dinosaur. Okay. Okay. That's a good start. Now see. अभी मैंने तुमको डायनासोर बोला तो तुम हंसना शुरू हो गई. Right? बट अभी जब कोई बोलता है यू ब्लडी कॉकरोच, गधा, क्या होता है? हर्ट हो जाता है, इंसल्टेड लगता है. अभी जब मैंने डायनासोर बोला तो तुमको हंसी आ गई, तुमको इंसल्टेड नहीं लगा. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू आर सो श्योर यू आर नॉट अ डायनासोर. Right. सो यू टुक इट एज अ जोक. बट अगर मैं बोलता हूं पल्लवी, यू आर एब्सोल्युटली इनकेपेबल, थोड़ा पागल हो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ऑफ किसी भी परफॉर्मेंस में. नाउ इफ यू हैव total confidence in yourself, then you will not believe my words. See, recently one of the best singers of the world passed away, Lata Mangeshkar ji, right? Lata Mangeshkar ji suppose came to your house and she sang a nice song, something hi-fi classical stuff गाती है, और किसी के भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, और लोग बोलते हैं क्या बकवास गाते हो तुम. तो लता मंगेशकर तो हंसेगी ना. Will she feel hurt? Tell me, will Lata Mangeshkar feel hurt because Saleel Pulekar or Pallavi or Vivek Mehrotra or Karan or Sunil Modi or Rakhi or Komal or Sridevi did not praise her? Yeah. Will she feel hurt? She will not feel hurt. The words will not have any impact on her. But see, Bhaiya, like when you said, like, you're a dinosaur. Wait. Yeah. See, when whatever this question starts with the but, na, that question has to be dropped. Okay. Okay, as you say. Very good. क्योंकि see, वो but is a very great truth, I tell you. वो but क्या बोल रहा है पता है? वो but ये बोल रहा है कि हाँ सही है, लेकिन मैं नहीं लूंगा ये. आप समझ रहे हो? ये बट है ना, बहुत बड़ा सच बताता है. You also know in the corner of your heart that it is right, but your intellect doesn't want to agree with it. You want to find a way out of that. That is why your sentence starts with but. I love you, but only if you keep giving me good gifts. Okay. So we really need to become aware of how we use this word but. A lot of relationship issues can be just solved if we are just aware of our speech, because our speech reflects our attitudes and our attitudes are shaped by our speech. बार बार अगर हम बट की लैंग्वेज यूज करेंगे ना,
हमारा एटीट्यूड ऐसा ढीला और कंडीशनल होते रहेगा, सब जगह हम कंडीशनल बिहेवियर करेंगे, सब जगह वी विल फाइंड एस्केप रूट्स. Yes sir, I will definitely work a lot, I'll complete this project, but it will come in, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे एटीट्यूड में कैसा आता है. Words are very powerful, I tell you, and especially like Karan asked in the beginning, how many of you have learned Sudarshan Kriya, and I believe all those who have learned are practicing Sudarshan Kriya daily. If you're practicing Sudarshan Kriya daily, Sudarshan Kriya amplifies the voltage of your words. Your words will have an impact. Forget about others. The maximum impact your words have are on your own attitudes, your own consciousness, your own habits. Right? So ये hurt होना या ना होना is a choice that each one of us has. Somebody said something, somebody did something, somebody ditched me, somebody betrayed me, whatever it may be. Whether I should get hurt because of it or not is my choice. देखो, हर एक व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो आप हर्ट नहीं होते हो, कुछ लोग बोलते हैं तो आप हर्ट होते हो, और वही कुछ लोग बाकी कुछ नेगेटिव बोले तभी आप हर्ट नहीं होते हो. उनकी कुछ बातें आपको हर्ट करती है. तो ये चॉइस कौन कर रहा है? कुछ लोगों की कुछ बातों का चॉइस कौन कर रहा है? तुम खुद कर रहे हो चॉइस. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. Nobody can make you happy. Nobody can make you sad. Only you can decide to be happy. Only you can decide to be sad. Tanya says, easy to say, but not easy to implement. Okay, don't implement. I'm not telling you what to do in life, what not to do in life. I'm telling you कि क्या करने से क्या होगा. मैं ये बताना मेरा काम है, आपको अवेयर करना मेरा काम है. उसके बाद आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो. Komal, you had raised your hand some time back. Siddharth will come to you. Komal had raised her hand some time back, so let us go to Komal first. Komal, are you there? Oh, sorry. I think yeah, can you unmute yourself? Yes, Bhaiya. Bolo. So I asked the same question twice on the chat box also. Okay. कि feelings की ऐसी की तैसी करे कैसे? First, I understood. आपने बोला commitment. Correct. That we have to be committed to our things. Feelings की जब when I also interacted with you one to one, I told you that I am someone who is full of feelings and so many emotions are always there. Correct. So this title itself is so interesting. That ऐसी की तैसी करे कैसे? Right. Good. Yeah, that's a good question. See, Komal and of course everybody, ऐसा नहीं कि feelings are bad. ऐसा नहीं कि you should not have feelings. You are a human being, because if you don't have feelings, then you are a robot. You are a machine. Correct? So feelings are a part of our life, and feelings can be nurtured and cherished. But what is happening today, more and more I see, especially with the people, in the younger ages, less than 40, too much importance being given to feelings. Too much importance. Much more, exponentially more than what they deserve. And more importance is given to negative feelings. Negative feelings का impact ज्यादा है लोगों की लाइफ के ऊपर. तो इसके लिए ये टाइटल है, फीलिंग्स की ऐसी की तैसी. तो इसका मतलब ये नहीं कि the feeling of wanting to share, the feeling of wanting to help, the feeling of wanting to express your love, ये नहीं होना चाहिए. Yeah, that is necessary in life. Correct? But ये जो बहुत ज्यादा importance हम दे रहे हैं ना, and see, we are getting influenced by several factors. Now I'll tell you one thing. A weak mind gets influenced easily. A strong mind gets inspired, not influenced. There is a big difference in these two words, influenced and inspired. कमजोर मन ना प्रभाव में आ जाता है. जो मजबूत मन होता है वो प्रेरित हो जाता है. प्रभावित होना और प्रेरित होने में अंतर है. Getting influenced is getting affected by someone else.
And getting inspired is taking something positive in someone, adding it to my positivity and making a एक और एक 11 out of it. तो दोनों में बहुत अंतर है. तो क्या हो रहा है? If the mind is weak, it is going to get affected again and again by the feelings. तो इसीलिए we need to have थोड़ा सा एक टशन वाला एटीट्यूड होना चाहिए. फीलिंग्स तू क्या मेरा रोकेगा? You know, that is what is expressed in this title. Come on, मुझे क्या इतना कमजोर समझ के रखा है? You know, I will decide what feeling I want to give importance to, what feeling I don't want to give importance to. I will decide what feeling I want to cherish and what feeling I just want to drop. So let the control be in our hands. That is what is meant here. And we have to understand the environmental influences, the societal influences, right? तो अलग-अलग चीजों से हम influence होते रहते हैं. There is a tremendous influence of, see, whatever is fed into us. जैसे literally food also affects our feelings. Correct? If you overeat, you feel low. Even if you eat the best food in the world, the most healthy, most sattvic food, but if you overeat, you will feel low. Isn't it? Yeah. How many of you have experienced that? ज्यादा खाया और low feel होना शुरू हो गए. किया है ना experience, right? तो food का effect होता है feelings पे. वैसे ही from the other four senses, food तो मुंह में से गया, but from the other four senses also we are getting a food. Some input is being fed into our system. What we see, what we hear, what we touch. We are getting all these inputs. That is also having an impact on our feelings. So what inputs are we exposing ourselves to? This we need to choose. What kind of things am I watching on television? What kind of things I'm watching on the internet? What feelings it is triggering in me? This I have to choose intelligently. So ये काफी सारे factors हैं, और ये factors कैसे है ना, ये पता नहीं चलता हमको. You are used to watching certain kind of things, you know, maybe once a day, once a week. And then after 3 or 4 years, you realize that that has had an impact on your behavior. वो होने के बाद पता चलता है. It takes time for the change to get installed in you. And then undoing the change becomes a difficult exercise. It makes sense to all of you? Yeah? So you are bigger than your feelings. Huh? You are bigger than your feelings. Please keep that in mind. And feelings are not necessarily bad. You cannot chuck them out of your life. You should not chuck them out of your life. पत्थर जैसे हो जाओगे फिर तो, है कि नहीं? या सिद्धार्थ, या you can go ahead. Jai Gurudev Bhaiya. Jai Gurudev. Thank you for keeping this amazing session. And I attended the last session also regarding public speaking. It was very nice. Yeah. And actually, I want to ask that how to control ourselves when even our relatives are like becoming selfish in the sense that taken for granted. When they have their own work, they will call us or they will ask me or something, test me, and after that it's like no kind of relationship, stranger relationship. So when work is required, so they remember me, and when there no work, so it's like relationship there or not, it's not. Correct. It's one and the same thing. Yes. So Siddharth, ये सबके साथ होता रहता है, not just relatives. Some of your colleagues are like that. Some of your friends are like that. है ना? ये सबके साथ होता रहता है. तो देखो, 1-2 बार होने के बाद हमको caution हो जाना चाहिए. कुछ चीजें ना होने के बाद ही पता चलती है, where we have to be careful. पहले नहीं पता चलता. So once you have got, like बोलते हैं ना, once bitten twice shy. वो क्या बोलते हैं, वो हिंदी में proverb है ना, फूक के पीता है. वो क्या proverb है वो? करण तुझे पता होगी. एक बार जो जिसका दूध का चला, हाँ, छाछ को भी फूक के पीता है. यस. दूध का जला. मैं जब दिल्ली आया ट्रैवल करते करते ना, तभी मैंने पहली बार ये सुना था. मुझे बहुत अच्छा लगा था. दूध का जला, छाछ को भी फूक. अभी छाछ तो गर्म है ही नहीं.
लेकिन वो दूध जला, उसका मुंह जल गया था। तो वो क्वेश्चन हो गया अभी, तो छाछ को भी फूक फूक के पी रहा है। तो वैसा ही है सर्टन पीपल। तो ना देखो, दो में से एक एटीट्यूड डिसाइड करो इन डीलिंग विद पीपल। आइदर यू आर डूइंग बिजनेस विद पीपल, आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय द वर्ड बिजनेस, और यू आर डूइंग सेवा। जब भी तुम किसी को हेल्प कर रहे हो और तुम्हारे मन में ये एक्सपेक्टेशन है कि जब मुझे जरूरत पड़ी तब वो भी मुझे हेल्प करे, तो फिर तुमने हेल्प नहीं किया, तुमने बिजनेस किया। wherever there is a give and take ना, it is business, it's not help. तो ये लोग तुम ठीक से चूज करो, जिनको तुम हेल्प कर रहे हो, जिनको तुम कुछ दे रहे हो, ताकि फ्यूचर में तुमको उनसे कुछ मिले। यू चूज दीज पीपल प्रॉपरली। द सेकेंड एटीट्यूड विच इज अ ग्रेटर एटीट्यूड इज सेवा। सेवा जब करते हैं तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। अभी तुमने भिखारी को खाना खिलाया, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि ये भिखारी जब अंबानी बनेगा तो वो मुझे 5 स्टार में ट्रीट लेके जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन होता है क्या किसी भिखारी को हेल्प करते हो? तुम सेवा कर रहे हो ना, तुमने कहीं गए, तुमने कपड़े डोनेट किए किसी को, तुमने किसी को कुछ पैसे दिए। यू डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि ये हमको रिटर्न में मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। व्हाट इज द आरओआई ऑन दिस, isn't it? So you decide where you want to do seva and where you want to have a transaction. So then your mind is clear, correct? So wherever you want to have a transaction, choose those people carefully. तो भी मतलब दिमाग यूज करो, है ना। बार बार आपको खुद का नुकसान कराने की जरूरत नहीं है ना? हाँ तानिया। Sir, I wanted to ask how to make the mind strong. Sadhana, seva and satsang. Do good sadhana, be involved in some seva activities, and satsang means be connected to the knowledge. This pehle na, I used to do just sadhana. I used to do when I done the Art of Living course, I used to do the Sudarshan Kriya. शुरू में एकदम शुरू में तो एकदम रेगुलर था, एक भी दिन मिस नहीं किया। फिर 3, 4, 5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा महीने में 2 बार मिस कर दी सुदर्शन क्रिया, फिर थोड़ी ऐसे शुरू हो गया होना। एंड फिर जब भी मैंने एडवांस कोर्स किया, आई हैड गॉन टू ऋषिकेश टू डू एडवांस कोर्स। फर्स्ट टाइम आई डिड एन एडवांस कोर्स इन माय लाइफ। पता ही नहीं था मेडिटेशन वगैरह, डीप मेडिटेशन क्या होता है। हम तो सुदर्शन क्रिया करके आंखें खोलने की जल्दी में होते हैं राइट, ऑफिस जाना होता है, कुछ भी काम होता है राइट, मेडिटेशन को तो टाइम ही नहीं देते। एडवांस कोर्स किया तो पता चला कि मेडिटेशन क्या चीज होती है, फिर सहज समाधि भी कर लिया राइट। और फिर उसी साल मैंने मार्च 99 मैंने एडवांस कोर्स किया, और सितंबर 99 मैंने डीएसएन कोर्स किया। डीएसएन कोर्स किया तो एडवांस कोर्स में पता चला कि दैट इंटेंस पीस। कुंफू पांडा 2 देखिए ना, 1, 2 जितने भी आई राइट। इनर पीस, कुंफू पांडा बोलता है ना बार बार, इनर पीस, उसका मास्टर शिफू राइट। इनर पीस क्या होता है और इनर पीस का क्या कमाल होता है लाइफ में, ये एडवांस कोर्स के बाद पता चला राइट। ऑल द पीस यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ इज विद इन यू। Sir, yes. पूरा करने दो। एंड डीएसएन कोर्स किया तो पता चला वॉट एवर स्ट्रेंथ एंड पावर यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ इज ऑल्सो विद इन यू, नॉट जस्ट पीस एंड हैप्पीनेस। All the strength, the power that you are looking for, it is within you. So people who are asking questions like, how do I strengthen my mind? How do I strengthen my commitment? How do I develop good habits? That strength is inside you. The DSN program is the technology to tap that strength. देखो, जैसे अभी ये चार्जिंग प्लग होता है ना, करेक्ट? ये जब आप फोन में डालते हो तो चार्ज होना शुरू होता है, करेक्ट? अब वो चार्ज होना क्यों शुरू है? क्योंकि इस वायर में से चार्ज जा रहा है ना ऑलरेडी, इट इज कनेक्टेड टू दैट सॉकेट, करेक्ट, विच यू आर प्लग्ड इन। देयर द पावर इज देयर, द इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। सो व्हाट इज एन अडैप्टर? द चार्जर। द चार्जर इज अ mechanism of tapping that power and putting it into your device. Are you getting this? Yes.
You need some technology to take the power from somewhere and install it in you. DSN is that technology to leverage the power from the consciousness and install it in you. That is DSN. तो कोई भी चीज में आपको पावरफुल बनना है, whether it is performance at work, whether it is handling your mind, whether it is being more committed in your relationships, whether it is developing good habits, wherever you need strength, I tell you, DSN is the technology to acquire that strength, because you have it in you. You only have to learn the technology of how to make use of it. Okay. Yeah, Sridevi. Sir, I have a follow-up question. Just wanted to ask that some people, they like, even though they don't do any kind of meditation or any such thing, but still they're very happy and they're like very controlled. They have good control of their life. So Good. why that like those people are doing well despite of not doing meditation and all these things? So how do you know they have not meditated in 25 lifetimes before this? देखो, जो तुम बोते हो वही तुम पाते हो, correct? If you sow methi seeds, you will get methi. If you sow mango seeds, you will get a mango plant. Yes or no? Correct? Now, when you sow methi seeds, you will get methi in 10 days. If you sow a mango plant, will you get in 10 days mangoes? वो plant बड़ा होगा, tree बनेगा, फिर उसके mangoes आना शुरू होते हैं. It takes 10 years. Correct? तो जो mangoes तुमको अभी दिख रहे हैं ना, किसी ने 10 साल पहले बीज बोया था. तो जो लोग तुमको अभी happy दिख रहे हैं ना, सालों पहले उसका बीज बोया गया था. या पता नहीं lifetimes पहले उसका बीज बोया गया था. And if they are not meditating now, then you know what they are doing? If they are just being happy, enjoying life and not meditating, you know what they are doing? जो investment किया है ना previous lifetimes में, उसको ATM से withdraw करते जा रहे हैं. Deposit डाल नहीं रहे अंदर. खत्म हो जाएगा after some time. They better start meditating. नहीं तो they won't be able to maintain the bank balance. विड्रॉल करते जा रहे हैं, है ना? बढ़िया. हाँ, श्रीदेवी बोलो. जय गुरुदेव भैया. हाय. जय गुरुदेव. सो भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम ऑलवेज इज द रॉन्ग वर्ड, बट मुझे फील गुड करना है. अब आई एम टेक्निक जैसे सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ, DSN भी किया है, एडवांस कोर्सेज भी किया है, बट एक लो पॉइंट हो जाता है एंड यू आर सेइंग डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू द नेगेटिव फीलिंग्स, बट आई वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू द गुड फीलिंग. अब उस चक्कर में मेरी खुद की बैंड बज जाती है कि फील गुड करना है. तो उस डिलेमा से कैसे? Don't give importance to the negative feelings doesn't mean you have to feel good. Why do you want to feel good? Tell me first. To Why do you want to feel feel good? happy. What has got happiness to do with feeling good? तो I'll feel light, I'll feel calm, I'll feel peaceful. ये तो ये सब feelings ही हुए ना. ये feelings को importance दे रहे हो. Happiness is not a feeling. Happiness is your nature. Happiness is your nature. Feeling good, feeling bad is a feeling. How do I... feeling के ऊपर focus जा रहा है ना, इसके लिए you're moving away from your happiness. So this thing that happiness is my nature, इसको experiential form में मैं कैसे लेके आऊँ? कुछ नहीं, इतना सोचो मत. देखो, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं ना हम, उसका कोई फायदा नहीं होता है. इसको एक्सपीरियंशियल see, it's like saying water is saying, how can I experience wetness? पानी बोल रहा है मुझे गीला होना है. क्या करना पड़ेगा मुझे गीला होने के लिए? अरे कोई मुझे गीला करे. तो आप उस पानी को क्या बोलो? See, you started laughing now. It's a stupid thing to say. That's the most stupid thing. Absolutely. Bang on. You said it. Yes. So this feel good thing is the most stupid thing to do. You are goodness. You are happiness. Don't wait for feeling good. It's like water saying, I want to feel wet. It's like sugar saying, I want to feel sweet.
Are you getting it? भूल जाते हैं, बस इसको ट्यून इन कर. हाँ, ट्यून इन करना है. This is where meditation comes. Meditation is the tuning with your nature. है ना? एक बार ना गुरुदेव को किसी ने पूछा, गुरुदेव आपकी इतने लंबे बाल और दाढ़ी क्यों है? गुरुदेव बोले, एक अर्थिंग है और एक एंटीना है. एंटीना ट्यून करता है और अर्थिंग ग्राउंडेड रखता है. Are you getting it? Yeah. So that is why the sadhana na so important. And yeah, that's like I was telling, DSN के बाद मेरा combination of साधना सेवा सत्संग शुरू हो गया. पहले it was just साधना, और फिर क्या होता था, ओनली साधना होती है ना तो वो बीच बीच में इरेगुलर होती ही है. लेकिन जब साधना सेवा सत्संग तीनों साथ में चलते हैं तो तीनों एक दूसरे को आगे खींचते हैं. So that's where the DSN came into my life as a very powerful thing. And then every year I kept repeating advanced and DSN courses every year. Then I lost count also how many I did. Okay. Amandeep Bansal has been waiting for a long time. Thank you, Bhaiya. Welcome. भैया, you जैसा टॉपिक है तो फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देनी है? मतलब we are human beings, तो फीलिंग्स पे बेस्ड तो हमारा सब कुछ चलता है. अगर मुझे बुरा फील हो रहा है, the moment I become aware, अब क्रिया भी करते हैं तो पता है कि एंड में अच्छा लगता है तो करते हैं. तो फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देना है? मुझे नहीं अच्छा लगता था क्रिया करके, और मैं अच्छा लगने के लिए क्रिया नहीं करता. हमारे टीचर ने हमको बोला था 60 दिन क्रिया रोज करो, एक भी दिन मिस नहीं करो. हमने प्रॉमिस दे दिया टीचर को, ठीक है करेंगे. अब तुमने इतना सिखाया है, इतना तो प्रॉमिस कर ही सकते हैं. आप हमारे लिए ही प्रॉमिस मांग रहे हो, खुद के लिए तो कुछ नहीं मांग रहे. तो मैंने प्रॉमिस दे दिया. एंड उन्होंने प्रॉमिस वर्ड नहीं यूज किया. हमारे टीचर ने 1997 14 नवंबर वाज द फर्स्ट शॉर्ट सुदर्शन क्रिया ऑफ माय लाइफ. यू नो व्हाट आवर टीचर टोल्ड अस? आई वांट गुरु दक्षिणा फ्रॉम ऑल ऑफ यू. गुरु दक्षिणा, इतना भयंकर वर्ड यूज किया ना, हम इमोशनली ब्लैकमेल हो गए. तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी. बोलो क्या है गुरु दक्षिणा? 60 दिन अगर मैं किसी भी दिन तुमको फोन करूं और पूछूं आज की सुदर्शन क्रिया की कि नहीं की, तो मुझे गुरु दक्षिणा में हाँ जवाब चाहिए. तो हमने बोला हाँ. और उस एक रीजन के लिए मैं सुदर्शन क्रिया करता था. मुझे सुदर्शन क्रिया करके, जैसे लोग तो बोलते थे हमको अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, मुझे कुछ नहीं होता था. मे बी आई वॉज सच अ हार्ड नट. Maybe I am still now anyway. So I did not do Kriya for feeling good. And then when I did the Kriya for 2 months, I realized already so many things have started changing in my life. So it doesn't matter whether you feel good or not. See, do things which are good for you, not necessarily those which make you feel good. I'll repeat the sentence. Do things which are good for you, not necessarily those which make you feel good. In fact, whatever that makes you feel good is not good for you. See, if you're watching some porn movie, you might feel good, but is it good for you? किसी को गाली देते हुए you might feel good, but is it good for you? किसी लड़के को किसी लड़की को छेड़ते हुए he might feel good, but is it good for him? Or is it good for anyone? किसी को दारू पीते हुए they might feel good, but is it good for them? किसी को सिगरेट स्मोक करते हुए might feel good, but is it good? So ये feel good के जाल में मत फंसो. Do what is good for you, not what makes you feel good. In fact, many things will make you feel uncomfortable, make you feel pained, make you feel bad, but they're actually good for you. पद्म साधना में धनुरासन करने में कौन सा फील गुड होता है? बट करना अच्छा है. जो तुमको अच्छा लगे वही करो, ये जरूरी नहीं है. जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो करो. और बहुत बार जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो करने को अच्छा नहीं लगता. So it doesn't matter.
Are you getting it, Amandeep? This is now excessive importance to that aspect. अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए. क्यों अच्छा लगना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है थोड़ा बुरा लगा तो? क्या फर्क पड़ता है? देखो, there are the parents who pamper their children, who don't allow their children to cry. Crying is a methodology introduced by nature for the growth of the lungs and the vocal cords of the child as it grows. वो निप्पल डालते हैं ना मुंह में कि बच्चा रोए नहीं. हेलो, देखा होगा ना आपने, वो निप्पल डालते हैं मुंह में, क्योंकि क्या बच्चा रोएगा नहीं तो अपने को परेशान नहीं करेगा. अरे लेकिन रोना जरूरी है, वो रोने से उसके लंग्स को एक्सरसाइज मिल रही है. 6 महीने का बच्चा सुदर्शन क्रिया नहीं करता ना, उसके लंग्स को एक्सरसाइज कहाँ कैसे मिलेगी? वो रोएगा तो उसके लंग्स को एक्सरसाइज मिलेगी, उसके वोकल कॉर्ड्स को एक्सरसाइज मिलेगी, उसकी आवाज खुलने लगेगी. क्राइंग इज नेसेसरी फॉर बेबीज. बट पेरेंट्स आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. This feeling good nonsense. That is why this topic, feelings की ऐसी की तैसी. समझ रहे हैं आप? It's okay to feel bad. It's okay to feel low. In fact, make friends with your low feelings. Don't treat them as your enemies. I had read the book God Loves Fun. God, ये टॉपिक ही जब मैंने पढ़ा ना बुक के ऊपर, God Loves Fun. I had never taken God as a, cool, funny dude who loves jokes. I had always taken God as a serious guy who is sitting there to punish. But when I read this topic, God Loves Fun, written by Gurudev Shri Shri Ravi Shankar, so immediately I purchased that book. And उसमें एक chapter है dealing with low feelings. Oh, I tell you, that chapter blowed my concepts. अभी भी ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल होती होगी, Amazon पे, Kindle, I don't know, Art of Living Store पे. Just check this. It's my favorite book. The book which I regard most highly in my entire life is An Intimate Note to the Sincere Seeker by Gurudev. But एक किसी चीज का एक soft corner होता है ना. For me, that book is God Loves Fun. Because it was the first book of Gurudev which I read in my life. तो बोलते हैं ना वो फर्स्ट लव, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो उसमें जो चैप्टर है डीलिंग विद फीलिंग्स, उसमें गुरुदेव सेज डू नॉट रेजिस्ट योर लो फीलिंग्स, बी विथ योर लो फीलिंग्स. द ओशन which agrees to be the lowest is the biggest and the strongest. सारी नदियां हाई पॉइंट पे शुरू होती है, लेकिन आखिर कहां में जाके मिल जाती है? इतना उछल कूद करती है, इतने रैपिड्स आ जाते हैं. अभी ऋषिकेश के डीएसएन में हम रैपिड्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश, December 14 to 17th. One day we will go for rafting also. तो इतना उछल कूद करती है नदी, इतना शोर मचाती है, इतने ऊपर से शुरुआत होती है नदी की, लेकिन आखिर तो समुद्र को ही जाके मिल जाती है ना. नदी सूख सकती है, समुद्र सूखा हुआ देखा है कभी? And how powerful the sea is. नदी की लहरों में तुम अच्छे बोट राइडर हो तो कर सकते हो. समुद्र के सामने किसी का कुछ नहीं चलता, बड़ी बड़ी शिप्स को भी कुछ नहीं कर सकते. The ocean is so strong. Why the ocean is the strongest? It agrees to be the lowest. That word agrees is very important. Please understand here. Be very sharp. Agreeing to be the lowest makes you the strongest. That doesn't mean you should be low all the time. Agreeing to be low, being okay with your low feelings makes you strong. So it's okay to feel low. It's okay to feel bad. It's fine. Agree with it. It will give you such tremendous strength. You will be shocked. उन लोगों का क्या करे, उससे मुझे कुछ फील नहीं होता. इसका तुमको क्यों बुरा फील हो रहा है श्रीदेवी? जो बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं होता, इसका तुझे क्यों बुरा फील हो रहा है ना? जस्ट ड्रॉप इट. ठीक है, नहीं फील होता तो नहीं होता. अच्छा, और जो लोग सामने से बोलते हैं डजंट मीन वो सच होता है. समटाइम्स इट इज जस्ट द ईगो टॉकिंग.
अंदर कुछ और होता है, वो सामने तुमको अग्री नहीं करना चाहते, ये भी हो सकता है। और अगर नहीं फील हो रहा तो नहीं फील हो रहा, इट्स ओके। हाउ टू लिव लाइफ एज अ प्ले, एज अ गेम, इट डजंट सीम सो प्लेफुल एट टाइम्स। दैट इज व्हाट मेक्स इट अ प्ले, नो, इट डजंट सीम प्लेफुल एट टाइम्स। See, every time if you are winning in a match, now what happened in the India West Indies series, with a clean sweep, वो मैचेस देखने को मजा ही नहीं आया, क्योंकि वन साइडेड विक्ट्री हो गई। लेकिन कभी ये हार रहा है, कभी वो हार रहा है, कभी ये हार रहा है, कभी वो हार रहा है, कभी ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है, तभी वो गेम होता है ना। देन दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। सो लाइफ शुड नॉट बी प्लेफुल एट टाइम्स, दैट मेक्स द प्लेफुलनेस मोर एंजॉयबल। कभी कभी अपने कमिटेड गोल्स में से इंटरेस्ट गया हो और हम उसे करते समय एंजॉय नहीं कर रहे हो, हाँ यही तो है ना, उसे कंप्लीट कैसे करें और फिर कमिटमेंट अगेन कैसे करें, यही है। सी, यू आर जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एंजॉयिंग समथिंग। सी, टेल मी, जो डॉक्टर्स बने, विच डॉक्टर enjoyed going to the morgue and cutting open the human bodies when they were in their first year of MBBS? And which engineer enjoyed taking that carpentry ka saw and cutting wood? सोचा था इंजीनियर बनेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में गया, वर्कशॉप में मजदूर की तरह काम कराया गया। किसको मजा आया? इतनी मेहनत हुई, अरे कंधा ऐसा दुखता था फिर, है कि नहीं? लेकिन इंजीनियरिंग पूरा किया ना, एमबीबीएस पूरा किया ना। कौन से डेंटिस्ट को मजा आता है तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए और उसके अंदर हाथ डालने के लिए? Who wants to get into other people's mouths? Nobody enjoys that. But it's a part of your job. You cannot be a dentist and say, no, but don't open your mouth. Baki sab main karunga. Then you can't be a dentist. You know. So anything you want to do in life, you think, like Virat Kohli को क्रिकेट खेलने को बहुत मजा आता है और इसके लिए वो अच्छा खेलता है, because he enjoys. You know, when Virat Kohli married Anushka, and Anushka is a pure vegetarian, and she, I don't know, forced or whatever, she educated Virat, and Virat also converted to being a vegetarian after his marriage. And then Anushka Sharma, she put Virat through a very tough diet. तो विराट कोहली had said in his interview कि वो 3 महीने का डाइट फॉलो करना इतना पेन था मेरे लिए, मतलब मैं कार्डबोर्ड भी देखता था, न्यूज़पेपर भी देखता था, तो मुझे खाने का मन करता था, ऐसा हाल हो गया था। तो हम लोग बड़ा अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के बेड पे लेटे लेटे बोलते, अबे 6 मार, you know. It's not so easy. They have not had a very good time all the time. They have gone through such pain and struggle to reach there. Lata Mangeshkar, when she was 13 years old, her father passed away and she was the eldest of 5 brothers and sisters. And so she started earning at the age of 13 for her entire family. And she had to face so much. Lata Mangeshkar faced so many rejections, for 9 years. In the Bollywood industry, Lata Mangeshkar kept giving auditions. Just imagine, Lata Mangeshkar kept giving auditions for 9 years and was rejected by all the music directors. And then she kept singing for 70 years. Undisputed queen of singing. Harrison Ford's car model was rejected by so many companies. He just applied as a research engineer in car companies. His research was rejected. Then he decided, I'll make my own car. Forget about getting a job in other cars companies. खुद की गाड़ी बना देता हूं. And that is the Ford car, which is used all over the world today. So you think he just was enjoying all the time? Everybody has to go through the tough times, the bad times. You have to suffer so much humiliation, isn't it? Okay, Suhasini. Chalo, last 2 questions. It's already 8:47. 5 more minutes and we'll end this. Yeah. Bolo. Hello. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Actually,
My question is that why are we designed that way? What is good for us? Why don't we feel like doing that? Why do we always, like for me at least, I always gravitate in the other direction. Like I know that I need to get up early in the morning. It's good for me. When I do, I feel great. But it's वो mind हमेशा ये बोलता रहता है, you know, it's okay, 2 दिन जाने दो, we'll get up a little late, we'll sleep in. ऐसा क्यों होता है? तो why aren't we designed that way? देखो, rather than asking why are we designed that way, ना, you instead of thinking problem oriented, why don't you think solution oriented? उसको कैसे हैंडल करना है, इस पे फोकस करो. Focus on the action. And anyway, that is nature's design or God's design. So I have no answer for that. That why are we designed that way? तो मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है. But मैं क्या practically सोचूंगा? Instead of trying to find out why I'm designed like that, right now, if I take some action, if I get up out of my bed and do the things I'm supposed to do, फायदा मेरा होगा. तो करो. Isn't it? See, this is where I kept repeating the DSN. It's a tough program, but I kept repeating because I knew this program is putting me into action in life. Because I was a person who had a lot of fear. Anything new I want to do, I used to have a lot of fear. नहीं हो पाएगा. Especially the fear of people, stage fright. And कॉन्फिडेंस लैकिंग था कि मैं कर सकता हूं. ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग. सोचते रहेंगे. I have spent more time in my house balcony watching the trees than the birds have spent living on the trees. पेड़ को देख के सोचते रहेंगे, क्या करूं मैं? जीआरई लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? मेरे दोस्त तो लिख रहे हैं, मुझे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? कैट तो लिख ही सकते हैं, नहीं कैट भी नहीं लिखते हैं, छोड़ो नहीं जमेगा. तो मैंने ना जीआरई लिखा ना कैट लिखा, कुछ नहीं लिखा. कैसे वैसे इंजीनियरिंग पूरा किया. एक्चुअली जीआरई वीआरई तो बहुत दूर की बात थी. तो ये सोचना. Then it took me some time to realize. As I started practicing Sudarshan Kriya, I started becoming more and more aware of how much time and energy I'm wasting in simply thinking about things. And when I did the DSN, so then, it gave me that वो propeller होता है ना, which propels the vehicle. It was like it propelled me into action. So I firmly believe, like advanced course तो साल में 2 बार तो करना ही चाहिए. And DSN 2 साल में 1 बार तो करना ही चाहिए. और मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है मेरे लाइफ में. मैं तो एडवांस कोर्स साल में 4 बार करता था. अभी तो मतलब कोर्सेस सिखाने में इतने उलझे रहते हैं, इसके लिए कम हो गया. बट as just as a volunteer, because see, as a volunteer you want to do seva activities, you have your personal life, you have your professional life, so you're doing multiple things. The people who are not volunteers in Art of Living, they just have their personal life and professional life to handle. But if you're a volunteer, you have now one more major target to handle, one more activity of your life. So if you want to do 3 things in the same 24 hours with the same 2 hands and same 2 legs, then your brain must be more capable. So for your brain to be more capable, you need some additional tools. जैसे जब विटामिन B12 एकदम ही कम हो जाता है तो इंजेक्शन लगा लेते हैं ना. जब विटामिन D3 एकदम ही गिर जाता है तो इंजेक्शन लगा लेते हैं. तो जब भी ज्यादा कुछ करना है लाइफ में तो एक वो इंजेक्शन की जरूरत है. DSN is that injection. Take that 4 days, ठकाक इंजेक्शन लगवा दो, एक्शन पैक्ड होके आ जाओ, उसका पावर चलता है 1.5-2 साल. ऐसे. And Rishikesh though is my favorite place. In fact, Rishikesh for me is more connected as a participant for advanced courses and as a teacher for DSN courses, because Rishikesh gives so much opportunities. देखो अभी गंगा मैया तो सबको पसंद है, लेकिन वो गंगा मैया में ना डुबकी लगाना ठंडे ठंडे पानी में, इसमें लोग बहुत बार सोचते हैं. तो ऋषिकेश के DSN में चॉइस ही नहीं होता है, कंपलसरी होता है. तुमको गंगा में डुबकी तैरना आता है या नहीं आता है, तुमको गंगा में उतरना ही पड़ेगा.
तुमने राफ्टिंग कभी लाइफ में की है, नहीं की है, यू हैव टू कम, राइट? इट गिव्स सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटी। जब ऋषिकेश में डीएसएन करते हैं तो वी डू सम टफ एक्टिविटीज, लाइक ट्रैकिंग होता है, then going into that, there are 2 or 3 waterfalls, so we visit those waterfalls. So these people get an ample opportunity to what it is to not feel good, and why feeling good is not so important. Because regardless of your feelings in the DSN, you are actually just doing things as a commitment, and then you realize it was good for me, though I did not feel good while doing it. And I tell you, it is reverse engineering. When you become okay to not feel good, the whole experience becomes more enjoyable. उल्टा होता है. फ्रेंड्स के साथ भी होता होगा ना ऐसे. तुम जब किसी से बात करते हो, जब भी कुछ सीक्रेट है तुम्हारे पास और तुम बोलते हो अच्छा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तुमको नहीं बताऊंगा, तो वो बोलेगा नहीं नहीं बताओ ना, अरे नहीं कौन प्लीज प्लीज बताओ ना. जितना तुम नहीं बोलोगे उतना वो ज्यादा आएगा तुम्हारे पीछे. और अगर तुम बोले अच्छा सुनो ना मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बताना है, सुनो ना प्लीज सुनो ना, बोले अरे ठहर यार बाद में आता हूं मैं. लेकिन तुम बोलेगे अच्छा कुछ सीक्रेट है बट नहीं तुमको नहीं बताऊंगा मैं किसी और को, तो क्या होता है उसको और सुनना है. फिर रिवर्स साइकोलॉजी. तो व्हेन यू अग्री टू बी द लोएस्ट, यू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू बिकम द बिगेस्ट, यू एक्चुअली आर द हाईएस्ट एट दैट टाइम. It is like that. When you agree to feel, to not feel good, to feel bad, you actually get so much strength that feelings don't rule you. In fact, you start handling your feelings and feelings don't handle you. It is like that. Yes, you must register for it now itself. Abhi ye bhi hai. Now I'm giving you an opportunity. It is 8:54. Those who will register for the DSN by 9:15, in the next 15 plus 6, 21 minutes, they are going to get some extra offers, which, our team has designed specially for you, like a 1-week free Zumba program, a 1-week free, body strengthening program. And because I have learned it the hard way, I want, all people to really learn the skill of public speaking. मैंने बहुत पापड़ बेले, मतलब बहुत मार खाया मैंने public speaking सीखते सीखते. So I would like to offer it to you as a gift. It is a program which would otherwise cost maybe 4,000 to 5,000 rupees. It's a video program, a lot of guided videos, assignments, ebooks, So that you will get, this is the one. 1 week body strengthening yoga, and yes, habits. ये habits है ना, bad habits जाती नहीं है, अच्छी habits ज़्यादा फटाफट develop नहीं होती है. So I have made a separate program on how to install any good habit into your system, such that it becomes a part of your life. So that's the habit program, and a 1-week free Zumba program. And then इसके नीचे अगर जाओगे current, तो this, the public speaking mastery blueprint program. So this extra gifts I would like to offer to the quick decision makers and the action takers. And we plan to do such sessions. I think current इतना ये काफी है. बाकी तो then they should go to the registration link. You can WhatsApp the link in the chat, and they can register. DSN is Bapa for yeah, absolutely. Yeah. Gurudev's designs are just out of the world. So okay, मुझे chat में इतना तो बताओ कि how many of you would like to register? How many of you would like to do this DSN program? You can just type. Do it. You want to do it, just type do it. And that is the link where you can go and you can register for it also. Now, I also want all of you to write one line, the single most important takeaway you got from this session. What is your single most important takeaway from this session? Please write that line. Pallavi is asking, do you have anything coming up soon? You know what is coming up soon?
present moment. Okay, in terms of programs, we are having a Kal Bhairav Ashtakam chanting 2-day 1 hour program by Swami Purna Chaitanya ji. I'm really looking forward to that. It's 22nd and 23rd Feb. And we are having Ashtavakra Gita going on. So we listen to Ashtavakra Gita for 15 to 20 minutes and then we come up with the highlights of it. 10 minutes. So every day half an hour, morning 7 to 7:30 or afternoon 2 to 2:30 or night 9 to 9:30. It will start in another 2 minutes, the Ashtavakra Gita, 9 o'clock. So that is what is going on. And then coming up soon is Mahashivratri celebration with Gurudev, 1st of March. Those who have already done DSN can take public speaking course separately. No, Sunil, you should repeat the DSN. And anyway, you put this message to Karan separately. I will see. Sunil, by the way, when did you do your last DSN? When is the last time you have done it? Make your commitment bigger. Yes. You have to do things that are good for you, not something that makes you feel good. Yes. We are bigger than the feelings, and I'm not a dinosaur. Yes, agree to be with low feelings. Absolutely. Commitment. Don't give importance to feelings. Yes. Agree to be at the lowest point. My takeaway. Wonderful. I will decide what feeling I want to cherish and drop. Yes. Our attitude is shaped by our speech very much, and the reverse also. Your attitude expresses in your speech, and your speech shapes your attitude. We tend to break our commitments again and again. What we do more, it becomes our habit, yes, and you become more of an expert in it. Do things which are good for you, not necessarily will feel good for you. Feeling is not absolutely important, but actually what is good for you. Choose commitment or feelings. Yeah. Yeah, if anybody needs any help in reducing the registering process, you can contact Karan, you can contact Jaideep, who is there. And anybody who has already registered while we were just reading this, you can type in the chat that you registered. Do what is good for you. So if we break our commitments, again, it becomes our habit too. I have done DSN, again do it. Yes, Krishna, congratulations. You may not feel good about something, but it is good for you. Do things which are okay. 3 years back, Sunil, it's a long time. I would suggest you should do it. DSN is like charger to rejuvenate our commitment. Very true. Take away, focus on commitment. Thoughts and feelings come and go. Pragati. Oh, Pragati, you registered just now. Superb, amazing. Being hand to Pragati. Don't give importance to feelings. Take away, thinking. Nice example of watching the birds. Yeah, example. It was a fact of my life at some point of time. Happiness is my nature. Yes, too much importance of feeling. What do you think that will happen? Bilkul. Congrats, Pragati. Yeah. DSN is like a charger. Yeah. Rohan registered. Absolutely. Congrats. Super. DSN 6 years back. We should have done 3 more in this period. 6 years is too long. वो कैसा है ना, एडवांस कोर्स मतलब गुरुदेव का लाड़ प्यार है और डीएसएन मतलब गुरुदेव की झापड़ है. तो ज्यादा तो लोग लाड़ प्यार ही लेते हैं, तो साल में 2-3 बार लाड़ प्यार लेना चाहिए, लेकिन 2 साल में 1 बार झापड़ जरूरी है. और गुरुदेव की तो झापड़ है भाई, उसमें हमारा फायदा ही होता है ना. 6 years back तो अंकिता बहुत टाइम हो गया. You should just register, don't even think about it. And 14 to 17, yeah, it's a long weekend because 15th is a Good Friday holiday. Congratulations to Pragati. April 14th is Ambedkar Jayanti. Oh, I did not know that. Acha, Jaideep, thanks for informing. Karthik has also registered. Wonderful, Karthik. Congratulations. Practice commitment and become expert in commitment.
Any challenges? Okay. Happiness starts with us. Yeah. Yeah. Ankita,